the next topic, that is what are the evidences of evolution. Okay, तो हमें पता कैसे चला कि evolution इतने stage तक पहुंचा है या evolution हुआ ही था, क्योंकि we don't books में तो या we know कि evolution हुआ था, but how did the scientists actually found out कि evolution कैसे हुआ था? There are various ways in which you can find out कि evolution has occurred, और उसके लिए different techniques यूज की जाती है, different fields of study होती है. So we'll talk about them now. Now talking about evidences of evolution, the first and the most important one जो बहुत लोगों को बहुत interesting भी लगता है, वो है study of fossils. अगर आपने कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसे जुरासिक पार्क वगैरह देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने जो डायनासोर वगैरह एक्सकवेट करे थे, वो फॉसिल्स एक्सकवेट करे थे. सो द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एज सच नोन एज पैलियोंटोलॉजी. Now, how is this study done? No, in normal circumstances, what happens is that the earth has many layers, and these layers are formed after a certain era or period has passed. तो ये होता है कि let's say I have this land level at an era, and we have animal A here. Animal A जो है यहाँ पे present है, but after a time the animal dies. So what happens is that उसके ऊपर एक और layer of soil जो होती है या sediment होता है. This is called the sediment. सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है. सो द नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म आएगा, इट विल कम ऑन दिस लेयर ऑफ द सेडिमेंट. ओके, सो हियर वी हैव एनिमल बी. ओके, सो एनिमल बी ऑल्सो कंटिन्यूज टू लिव फॉर इट्स लाइफ टाइम, और जब उसकी डेथ होती है, देयर इज अनदर लेयर ऑफ सेडिमेंट. सेडिमेंट डिपॉजिट को मैंने एस टी लिखा हुआ है यहाँ पे. So in the same way, वहाँ पे animal 3 आता, animal C आता है, and then there's another deposition over it. Okay, so finally what happened? Let's say हम यहाँ पे है present day, और we are the humans. Okay, so present day humans जो होते हैं, उनके अंडर ही बहुत सारे layers में animals are present, or rather the animal remains are present. Because what happens is that we are studying fossils here, we are not studying animals. So fossils mostly consist of that parts जो decompose होने के बाद भी they are retained on the earth, on the rocks, like parts of bone structure, teeth, etc. Means all those layers जो decompose नहीं करते in sedimentary rocks के अंदर, those are the ones which are preserved as fossils. So this is the reason कि हमें animal के fossils बहुत commonly मिल जाते हैं, but plant के नहीं मिलते, क्योंकि plant parts anyway बहुत जल्दी decompose करते हैं under these rocks. So क्या होता है कि when you start excavating, excavation is the process of removal of these fossils. When you start excavating, you reach animal C. You further excavate, you reach animal B, and much further you reach animal A. तो इससे we can deduce that animal C was present at the
at an era which was very nearest to the present day. और animal C जो था, it was present very nearer to us, in very close past. But when we talk about animal A was very away from us. तो कह सकते हैं कि सबसे old इस एग्जाम्पल में हमसे सबसे oldest relative जो होगा वो होगा animal A. So animal A is the oldest, then is animal B, then is animal C. So we can follow a thumb rule here, which is valid for every such thing. Older is the fossil, greater the depth it is found in. Okay. So the thumb rule we found out from this is older is the fossil, greater is the depth it is found in. So the animal जितना ज़्यादा पुराना होगा वो उतने नीचे sedimentary rocks में पाया जाएगा. Okay, so now we come to the stage कि evidence कहाँ से मिल रहा है कि we have evolved from some other organism. Similarity may be found between the fossils and the present day organisms. When we remove or excavate a fossil from the sedimentary rocks, we study its anatomy क्योंकि skeletal structure mostly हमें मिल जाता है. We study the bone structure, we study brain में sutures, the brain capacity and all that. So when we study that, we compare it with the present day organisms, और very fortunately हमें similarities मिल जाती हैं कि this organism has so much similarity with us, so we can say it was an ancestor to us, और उसे भी कहते हैं या it belonged to the ancestral stock. When you use the word ancestral stock, इसका मतलब है from this organism जिसका fossil हम study करें, that may be a base organism, और इस ancestral stock से you may gain many different organisms from it, और ज़्यादा species इसी organism से derive हुए होंगे जो modern day है. इसका एक एग्जाम्पल जो है जो बहुत ही सिंपल है वो है द फोरलिम्ब. नाउ द बोन्स ऑफ द फोरलिम्ब in mammals are humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. Okay, so
इन द केस ऑफ मैमल्स जो बोन्स होते हैं फोर आर्म के, वो होते हैं ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, द कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, एंड जो हमारे फिंगर्स के डिजिट्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ phalanges. So different organism में भी all these structures are same in different mammals. Let's say जैसे we have bat जिसमें भी ये present है, we have cheetah जिसमें भी ये present है. Now talking about dolphin which is also a mammal, उसमें भी ये present है, and as usual in man it is also present. So this is how we come to know कि all these organisms, man, dolphin, cheetah, bat, all had a common ancestor. जिससे ये सब derived है. And that is the beauty of the study of fossils. Now this brings us to the next topic. The next topic that we are going to study is that of homology. Now what is homology or homologous structures? Okay, so we'll discuss now what is homology and what is divergent evolution. Homology will break the words. Homo means pure or same, and logy means logos, that is study. So what happens when we talk about homology? Homology में ये होता है कि an organism, let's say हमारे पास दो organisms हैं. They have been derived from the same ancestral stock, but when it comes to adaptation, one goes and lives in the desert और जो दूसरा organism है वो पानी में चला जाता है. So दो उनके पास वो जो structures है उनके origin same है. When I'm talking about origin of the structure, उसका मतलब ये है कि कौन से germinal layer से उसके body के parts derived हैं. जैसे different organisms में different जर्मिनल लेयर से डिफरेंट पार्ट्स अराइज करते हैं, बट जब होमोलोगस ऑर्गन की हम बात करते हैं तो वो सेम जर्मिनल लेयर या जर्मिनल लेयर से ही वो डिराइव होते हैं. नाउ द होमोलोगस ऑर्गन वी आर टॉकिंग अबाउट, नाउ होमोलोगस ऑर्गन में ये होता है दे हैव बीन डिराइव फ्रॉम द सेम स्ट्रक्चर, फ्रॉम द सेम एंसेस्टर. तो उनमें सिमिलैरिटी ओरिजिन की होती है, बट क्योंकि देयर इज चेंज इन द हैबिटेट दे आर गोइंग, तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना, इन द प्रीवियस वन वी ऑब्जर्व कि सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इट नीड्स टू अडेप्ट इटसेल्फ. अडेप्ट करने के लिए इट नीड्स टू चेंज सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो उसने अपने एंसेस्टर से लिया हुआ है, एंड दैट लीड्स टू अ डिफरेंट फंक्शन. क्योंकि a desert animal does not need flippers in the same way, let's say aquatic animal does not require the presence of limbs, because उसे तो पानी में रहना है तो flippers use करेगा. So that leads to different function, but it is also the case कि homology में there may be same function also. जैसे let's say humans and monkeys, they both have the same use of their hands, which are the same origin because of four limb structures. So we have, let's say, an ancestral, this is the ancestor species here. Ancestor species जो थे, एक चला गया हमारा डेजर्ट में एंड एक चला गया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. ओके, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू लेट्स से समथिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें एडेप्टेशंस चेंज हो गई, और दिस विल कन्वर्ट इनटू लेट्स से अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म.
तो दो उनमें एंसेस्टर सेम है और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओरिजिन सेम है, बट क्योंकि वो एडेप्टेशंस उनके डिफरेंट है, दे कन्वर्ट इनटू अ डिफरेंट लुकिंग ऑर्गन्स। इसका एग्जांपल जो है वो है फोरलिम्ब ऑफ मैमल्स। ओके, फोरलिम्ब ऑफ मैमल्स जैसे हम लेते हैं एक्वेटिक में, aquatic environment में like we have dolphin, so dolphin needs that for swimming के लिए जो bones हमने पहले डिस्कस करे थे, I'll write it down, humerus, radius and ulna, carpals and metacarpal and phalanges. Okay, so क्योंकि the bone structure is same but it needs adaptation for swimming, so this aquatic environment में dolphin will convert the organs into flippers. Now taking the example of bat में क्या होगा, it needs that for flying or flying, that is, so the environment is air. Okay, so in air it needs flying, it will convert its forelimb, these bones organize करके it will convert it into a structure which is known as patagium. Patagium is the wing like structure which helps it in flying. Now we will understand what is divergent evolution. Okay, so before understanding divergent evolution, let us talk what is divergence. In physics, आपने पढ़ा होगा कि there's a lens which is known as the concave lens. So in concave lens, आप किसी भी point को अगर मतलब ray of light को pass करो, it diverges. Okay, so in the same way, यहाँ पे क्या होता है? Organisms start from a single point, one point, and they move outward or away from that point, that is they show less similarities with themselves. So हम यहाँ पे बनाते हैं एक concave mirror, ये रहा हमारा point और diverge कर गया. Okay, so now हम now we will see how this is bio and not physics. Okay. Okay, so this is the ancestral stock. Okay, from the ancestral stock हमें दो नए organism उनके adaptation के basis पे मिले. So this is, let's say, organism A and organism B, or species A and species B, जो ancestral stock से ही develop है. So क्योंकि यहाँ पे they move away from similarity due to change in environment, this is known as divergent evolution. Another example which we can take here is that of vertebrate, brain or heart. Okay, so why vertebrate, brain and heart? Now what happens in vertebrata is कि every organism जो vertebrates में present है, they all have the same compartments or chambers of the heart. They have the cerebellum, the medulla oblongata, the cerebrum, all those parts are the same. लेकिन जो change आता है वो है capacity of the brain.
जैसे if we talk, the mammals have a larger brain capacity. इन फिशेस द कॉन्ड्रिक थीस या कार्टिलेजिनस फिशेस उनकी ब्रेन कैपेसिटी ज्यादा होती है बॉडी प्रोपोर्शन में, बर्ड्स की ज्यादा होती है रेप्टाइल्स के कंपेयर में. सो व्हाई इज इट कि दे ऑल हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल वो स्टॉक, लेकिन उनकी ब्रेन कैपेसिटीज अलग अलग है. सो दिस इज वेयर होमोलॉजी कम्स. तो ये होता है कि उनकी जो ब्रेन है दैट इज वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिहेवियरल कॉम्प्लेक्स. जितना ज्यादा उस ऑर्गेनिज्म को इंटरैक्ट करना पड़ेगा अपने सोसाइटी में, अपने स्पीशीज के बीच में या इंटर स्पीशीज रिलेशंस के बीच में, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ज्यादा होगा. सो इट नीड्स कि जो ब्रेन कैपेसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी. Another example which is worth noticing in plants is that of thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbita. So unme structure was the same, but what happened is bougainvillea developed a thorn out of it. Now the function of thorn is to prevent eating by herbivorous plants, like herbivorous animals जैसे cow हो गए या sheep, goat वगैरह. But in the case of cucurbita wanted, or it needed the support while growing, since the fruits are very heavy, therefore it developed tendrils. So the structure here was same, but the function was very different. So I'll write the what is the summary of homology, that is the structure is never maybe, structure is similar in origin, the function meanwhile may or may not be different. So this is the one line summary of this whole thing, homology and divergent evolution, ki the structure is similar in origin in every case of every example of homology, but the function may or may not be different. Next we move to the diametrically opposite of this. मतलब if homology is the east, analogy is the west, exactly उसका opposite क्या होता है? That is what analogy and convergent evolution is all about. Okay, so analogy को we will define as analogy is, अगर हम उसे एक लाइन में summarize करेंगे कि what is analogy,
हमने होमोलॉजी में पढ़ा था कि द स्ट्रक्चर्स इन दिस केस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके जो ओरिजिन होते हैं वो सेम होते हैं. In the case of analogy or analogous organs, the structures are very different in terms of their origin, but function के terms में they are very similar. So we'll write that down. Structures dissimilar in origin but similar in function. Okay, so इसके लिए भी we can talk of an organism. Examples. Okay, examples are very important in biology. So example इसमें जो ले सकते हैं वो है bat, butterfly और bird का. When we are talking about butterfly first, okay. Now butterfly के केस में there is no concept of bones there, क्योंकि वो arthropoda है, it's an invertebrate. Now talking about birds, the structure of the bones in birds is very different from that of vertebrates. They have pneumatic bones. And now talking about bat, which is a mammal and also vertebrate, उसमें bone structure is very similar to us, four limb जैसा हमने बताया था. But what is the function that all these structures are serving? Butterfly को भी fly करना है, so the structure is providing the same function. Bird को भी fly करना है and bat को भी fly करना है. So in this case, though the structures have very different origins, लेकिन उनके function जो है बहुत ही similar है. So the example here in this case would be bat, butterfly, and birds. Okay. एक और एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं दैट इज ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट आई. सो ये होता है कि लेट्स से द आई ऑफ ऑक्टोपस ओके. सो ऑक्टोपस आई का भी सेम फंक्शन है कि उसे विजुअल रिसेप्शन लेना है, एंड ह्यूमन के केस में भी वी ऑल सी बिकॉज दिस विजुअल रिसेप्शन और स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है उससे. बट जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैव वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि ये एक मोलस्का है तो मोलस्कन आई की रेजोल्यूशन हमसे खराब होती है, बट ह्यूमन आई है सो ह्यूमन आई में रेजोल्यूशन इज मच बेटर and the human eye is much more developed in comparison to the octopus eye, but the function they serve is that of vision. और वही similarity है दोनों में. इस केस में the function they were serving was that of flying, सब में, but the structures were different here. I'll take another example of that of plant. Okay, so this is an example from botany कि the root of sweet potato and the tuber of potato, दोनों का ही function होता है, they act as organ of storage या organ of perennation भी कहते हैं. Why do we use perennation? Perennation का मतलब होता है those organs which can be used during condition of stress. तो the
स्वीट पोटैटो जो होता है, इट स्टोर्स ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इन इट्स रूट, while in the case of potato जो tuber होता है, it is a modification of stem. Because of this reason, क्योंकि it's a modification of root, तो इसका origin different है. If it's a modification, the tuber of potato, modification of the stem, sorry, so it is also origin different होता है इसका, but the function they are serving is same, that is they are both organs of storage. Now we will talk about what is convergent evolution. Okay, so convergent evolution समझने के लिए I can tell you a very easy example. Let's say कि आपके स्कूल में there is a farewell party or something, or you have a theme of formal, and let's say किसी दूसरे स्कूल में भी there is a farewell party, वहाँ पे भी theme is that of formal. So what happened when you go for shopping? You buy a formal wear and you find someone from other school also buying a formal wear. So दो आप लोग दूसरे स्कूल से बिलोंग कर रहे हो, यहाँ पे दूसरे स्कूल मतलब दूसरे let's say origin, क्योंकि स्कूल we tell that कि स्कूल has different origins, हमारा स्कूल अच्छा होता है. Okay, so different origin, you do belong to different origin, but your requirements are the same. So you end up buying the same kind of clothes. In the same way, convergent evolution में भी वही होता है. The organisms come from different backgrounds or different origins. कुछ शायद vertebrates हों, कुछ invertebrates हों, but उनकी requirement जो होती है that is very similar. They all want to adapt to a very certain environmental condition. In this case, जैसे हमने example लिया था कि bats and birds का, they all want to fly. But the origins are different, so they adapt towards a similar kind of condition. Or in the same way as there's a converging lens or convex lens, यहाँ पे भी वैसा ही होगा. There's a convex lens. Okay, so they are converging towards something. So this is again biology. So here we have organism A and here we have organism B. Yeah, species A and species B, and both of them want to fly. Okay, both of them want to fly, so they end up converting their structures into a very similar fashion. Let's say they get converted into something like this or a similar structure. So this is what convergent evolution is all about. Till now जितने भी हमने evidences observe करे, all those evidences are external evidences. हम either morphology study कर रहे हैं या anatomy study कर रहे हैं, जिससे we are deriving और interrelating कि इन दोनों में ये relation होगा. But क्योंकि science has developed a lot during these years, we go beyond that, beyond anatomy. We go into the cell, into the biochemistry. So what are the biochemical evidences? Okay, so we'll understand what is biochemical evidences. Let's say कि there is a enzyme. वो एंजाइम जो है वो बस मैमल्स में प्रेजेंट है
और वो बाकी और किसी या लेट्स से वो एंजाइम जो है वो टोटल वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है बट वो इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो वी कैन ग्रुप देम. लेट्स से वी हैव एन एंजाइम और in vertebrates the enzyme is present, plus मतलब present, while in the case of invertebrates the enzyme is absent here. तो we know, we will deduce it, ये हम कह सकते हैं कि since ये सारे vertebrates में present है, all those vertebrates must have a common ancestor. Okay, they all must have a common ancestor. CA is common ancestor. Okay, so why are we talking about enzymes here? What is the relevance of enzymes here? तो जैसे आपको पता होगा, most enzymes are proteins. And how are proteins formed? Proteins form होने के लिए there is RNA से प्रोटीन बनता है and then from DNA RNA बनता है. So when we are talking about protein correlation between a group of organisms or species, तो in turn हम बात कर रहे हैं कि they share the DNA, some part of DNA, that is genes. There is similarity in the genes of the organisms जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं. There's another example. जिसका एविडेंस हमें बायोकेमिस्ट्री से मिला, वो है if you know that there are 3 domains of or classification of all organisms, वो 3 डोमेन को हम कहते हैं यूकैरिया, जिसके अंदर आते हैं प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, फंगाई एंड एनिमल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो है आर्की बैक्टीरिया. जो आर्की बैक्टीरिया है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्टर्डी ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स में. उसमें आता है मिथानोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड हैलोफाइल्स. और जो थर्ड ग्रुप होता है दैट इज यू बैक्टीरिया. सो यू बैक्टीरिया के अंदर हमारी जो नॉर्मल मोनेरन्स आते हैं. ओके, सो इंसिडेंटली पहले ये सोचा जाता था कि सिंस आर्की, इसके नाम से ही पता चल रहा है आर्की मीन्स प्रिमिटिव, तो पहले सोचा जाता था कि नंबर 1 इज आर्की, सबसे पहले आर्की आया था, फिर यू बैक्टीरिया आया था, और फाइनली यू बैक्टीरिया इवॉल्व्ड इनटू यूकैरिया. बट आफ्टर वी डिड बायोकेमिकल स्टडीज ऑन दीज, हमें पता चला कि ये सीक्वेंस जो है वो गलत है. These two organisms, eukarya and archaebacteria, were found to be much closer to each other than eubacteria. So what may seem on outside to be a very simple case, जब आप बायोकेमिकल एविडेंसेस यूज करोगे, you come to know that there is more than what meets the eye.